और बहुत खुशी है कि हम सब लोगों के साथ हैं जहाँ पे हम अपने काम के बारे में बता सकते हैं और आप लोग से सीख ही सकते हैं। तो हमें मालूम है कि समय कम है, तो हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और हमें आशा है कि हम इस कमरे के बाहर भी चर्चा कर पाएंगे। यूथ का कॉन्टेक्स्ट इंडिया में काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बात करी है, बट मैं एक लाइन और कहना चाहूँगी कि youth represent a very important demographic in India, a very large population, proportion of the population, which is seen as something to be harnessed, something to be capitalized on. युवा का इस्तेमाल किया जाएगा देश की प्रगति के लिए, देश के बढ़ावा के लिए, देश की सब कुछ अच्छा लाने के लिए हमें युवा की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बहुत डोमिनेंट अप्रोच है जिसको हम कहते हैं यूथ फॉर डेवलपमेंट या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच, और संस्थाएं इसी उसके साथ अप्रोच के साथ काम करती है। कुछ कम संस्थाएं यूथ डेवलपमेंट अप्रोच के साथ काम करती है, जिसके तहत हम ये मानते हैं कि यूथ आर द एंड एंड नॉट नेसेसरीली अ मीन्स टू सम एंड। तो हमें यूथ को एक रिसोर्स की तरह ना देखने की जगह एक वल्नरेबल सेक्शन की तरह देखना चाहिए, जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो एक ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच में, जिससे वो ट्रांजिशन उनके स्मूथ हो और जिस सोसाइटी का वो पार्ट है, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी आ रही है, जिसका मेरा मतलब है कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, रीजन, एबिलिटी की संरचनाएं, कैसे वो चैलेंजेस को जो चैलेंजेस आ रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स की वजह से, उनसे कैसे डील कर पाए। तो वो एक यूथ डेवलपमेंट अप्रोच हम मानते हैं और इसकी तरफ संवादा कोशिश करती है अपना पूरी कि इस अप्रोच के साथ काम कर सके। यही हमारा मॉडल है। नेक्स्ट प्लीज। तो संवादा ये एक स्माइल जो इनिशिएटिव था उसका एक ऑफशूट था, कर्नाटका बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन 30 साल से हम मार्जिनलाइज्ड यूथ के साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी कि हम एक प्रिविलेज्ड अर्बन यूथ को एक्सपोजर्स और उनके इमर्जन के लिए उनको रियलिटी दिखानी है, वहाँ से एक शुरुआत हुई थी, बट वो आगे एक्सटेंड हुई है कि हम मार्जिनलाइज्ड यूथ के साथ काम करें as partners to create a more gender just, socially inclusive and environmentally sustainable world. तो हमारी संस्था हम मानते हैं यूथ वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, और जो डेफिनेशन हमारे काम को ग्राउंड करती है वो है ऑल फॉर्म्स ऑफ राइट बेस्ड यूथ एंगेजमेंट दैट बिल्ड पर्सनल अवेयरनेस एंड सपोर्ट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ यंग पीपल। हम यूथ को किसी तरह से बेनिफिशरीज नहीं मानते हैं, ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज मानते हैं। हम मानते हैं कि हमें उनके साथ खड़ा होना है, उनके साथ चलना है, उनके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। और जब उनके वेलबींग के लिए हम काम करेंगे, वो आगे सोसाइटी में अपने आप बदलाव की तरफ बढ़े। वो अपनी मर्जी से काम करना चाहेंगे अगर उनको उसकी तरफ बढ़ना है या नहीं। बहुत जल्दी से मैं आपको थोड़ा काम के बारे में बताती हूँ। संवादा के 4 वर्टिकल्स हैं। तो यूथ सेंसिटाइजेशन, लीडरशिप बिल्डिंग और लाइवलीहुड प्लानिंग प्रोग्राम को जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो काम करता है वो है हमारा साहिना प्रोग्राम, जो हमारा डायरेक्ट यूथ के साथ इंटरवेंशन है। फिर लाइवलीहुड एजुकेशन के लिए काम करता है बदकू सेंटर फॉर लाइवलीहुड्स लर्निंग। फिर यूथ वर्क प्रमोशन और यूथ राइट्स एडवोकेसी, जिसके साथ जनार्दन में काम करते हैं, उसका एक सेंटर है, सेंटर फॉर यूथ वर्क एंड यूथ राइट्स। और यूथ सेंट्रिक नॉलेज बिल्ड करने के लिए रिसर्च के थ्रू वो काम करते हैं धनंजय रिसर्च से। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम है सहायना, जिसके ये प्रोग्राम जो डायरेक्टली यूथ के साथ काम करता है, वो डिलीवर होता है यूथ रिसोर्स सेंटर्स के थ्रू। ये कर्नाटका के 5 डिस्ट्रिक्ट में यूथ रिसोर्स सेंटर्स है, और ये यूथ रिसोर्स सेंटर्स एक सेफ स्पेसेस हैं जो किसी युवा के फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस और एजुकेशन से परे एक 5th स्पेस है, जहाँ पे युवा आते हैं, बातचीत करते हैं, अपने कंफ्यूजन्स, डिलेमास, प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उनको सुना जाता है, दोस्ती बनाई जाती है। अलग अलग सोशल लोकेशन से यूथ आते हैं, उनको गाइडेंस मिलती है, मेंटरिंग मिलती है यूथ मेंटर्स के थ्रू, और जहाँ पे उनके वेलबींग की तरफ और इंट्रोस्पेक्शन की तरफ काम शुरू होता है। तो ये एक स्पेस क्रिएट किया जाता है।
It's a space where they can be seen and heard for who they are and gain acceptance from their peers and mentors. तो एक अधिकार जो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं वो ये है कि every young person has the right of freedom of expression and thought. So this is one space where young people can be themselves. And they explore themselves, and in turn they explore the society. When they place themselves in the society, that is when they start gaining knowledge about, deepen their understanding about social structures, and that's when the transformation starts happening. Next slide, please. तो ये चित्र हमारे युवा ने बनाया है, तो ये काफी अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है कि YRC कैसा दिखता है. तो अलग-अलग जाति से, लिंग से, अलग-अलग समुदाय से, अलग-अलग इलाकों से लोग आते हैं, यूथ आते हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, और वहाँ पर आकर गाना बजाना भी होता है, मस्ती भी होती है, आंदोलन की तैयारी भी हो रही है, एक लाइब्रेरी स्पेस भी है वहाँ पर. और तो ये रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे ये एक स्पेस है जहाँ पे यूथ अपने आप भी बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं और उनको मेंटरिंग मिलती है. यूथ मेंटर्स होते हैं रिसोर्स सेंटर्स में, तो एक सॉर्ट ऑफ हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है उनकी पूरी जर्नी का. 2 से 3 साल की जर्नी होती है हर एक युवा के साथ, जिनको इंडिविजुअल मेंटरिंग दी जाती है वहाँ पर. चैलेंजेस वी टॉक अबाउट नेक्स्ट. तो ये बहुत जल्दी जो हमारा स्ट्रैटेजी है, एक राइट्स बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है, जो यूथ एंगेजमेंट का, तो मैं उससे आपको ले चलती हूँ. तो हमारा शुरुआत होता है आउटरीच से, जो हम कॉलेज में जाके स्टूडेंट्स को से बातचीत करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आइए आप हमारा YRC विजिट करिए. उसके साथ साथ इनफॉर्मल डायलॉग्स शुरू होते हैं जिनको हम कहते हैं चिली पिलीज. तो वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हो सकते हैं कुछ भी जिसको लेके जो युवा को अफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर लेके चर्चा शुरू होती है YRCs में. वो कोई मूवी के बारे में डिस्कशन भी हो सकता है, किसी बुक के बारे में डिस्कशन हो सकता है. तो वहाँ से हम युवा हमारे साथ जुड़ना शुरू होते हैं हमारे सेंटर YRCs से. उसके बाद साथ साथ होता है सेंसिटाइजेशन प्रोसेस. उसके बाद जिसमें बहुत इंटेंसिव वर्कशॉप्स और एक्सपोजर विजिट्स होते हैं इन थीम्स को लेके, जेंडर सेक्सुअलिटी, मैरिज, कास्ट, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सस्टेनेबिलिटी, लाइवलीहुड प्लानिंग, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है सोसाइटी को लेके इन थीमेटिक एरियाज के रिस्पेक्ट में. तो सेल्फ एंड सोसाइटी को कैसे हम देखते हैं, कैसे युवा देखते हैं, तो वो इन इंटेंसिव वर्कशॉप्स के थ्रू किया जा रहा है. उसके साथ साथ यूथ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मेंटरिंग, लाइब्रेरी सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, वो सब यूथ सपोर्ट किया जाता है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि अब युवा कैसे एक एक्टिव सिटीजन और खुद को एक यूथ लीडर की तरफ कैसे देख सकते हैं. तो वहाँ से लीडरशिप बिल्डिंग शुरू होती है. लीडरशिप पर्सपेक्टिव्स, कैपेसिटीज. तो पर्सपेक्टिव्स और स्किल्स दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि हम उन्हें भाषण दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, बट उसका यूजेबिलिटी क्या है वो स्किल्स के थ्रू होता है. वो लीडरशिप बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स एक जो नोड है वहाँ से शुरू होता है. उसके साथ साथ जब हम देख रहे हैं युवा को कि वो यूथ लीडर्स, हाँ वो आगे शायद आगे इसमें काम करना चाहते हैं, तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है ये प्रोग्राम. कुछ युवा काम करते हैं यूथ राइट्स पर, कुछ काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर. तो यूथ क्लब्स बन जाते हैं जिसमें फैक्ट फाइंडिंग, कैंपेनिंग, अवेयरनेस, एडवोकेसी, क्या एक्शन हम ले सकते हैं उन मुद्दों पर जो युवा को अफेक्ट करते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में. कि हाँ कॉलेज में एंटी सेक्शुअल हैरेसमेंट कमिटी हमें चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल होना चाहिए. जो मुद्दे युवा को अफेक्ट करते हैं वो उनको खुद समझते हैं और उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, उस पर और युवा के साथ मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, फैक्ट फाइंडिंग होता है और उस चीज़ पे वो एक्शनेबल प्रोग्राम्स बन जाते हैं. तो ये बहुत ऐसे वेरी कंसाइसली आई टोल्ड, इट्स अ वेरी बिग प्रोग्राम, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इंटरवेंशन. फिर हमारा जो सेकंड वर्टिकल है वो है बंदूक सेंटर फॉर लाइवलीहुड्स लर्निंग. तो ये इस्टेब्लिश हुआ था इसलिए कि जो भी मार्जिनलाइज्ड यूथ की जो भी लाइवलीहुड नीड्स है उनको एड्रेस करने के लिए सेंटर चालू किया गया था. और एक पर्सपेक्टिव्स और स्किल्स दिए जाते हैं सोशली क्रिटिकल प्रोफेशंस में, जैसे कि मीडिया, काउंसलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सोशली क्रिटिकल प्रोफेशन से मतलब ये है कि ऐसे प्रोफेशंस जो शायद
उनकी कम्युनिटी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। या हमें फेमिनिस्ट काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हम वो कोर्स ऑफर करेंगे और स्टूडेंट्स आके उससे हमें जुड़ेंगे, वो कोर्स लेंगे। और साथ साथ सिर्फ कोर्स कराना ही मकसद नहीं है, उनका प्लेसमेंट्स आगे, उनका एलुमनाई सपोर्ट कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो वो हैंड होल्डिंग किया जाता है। यहाँ पे जो जो हम अधिकार सोचते हैं, जो अंडरपिन करता है ये सेंटर को, वो ये है कि एवरी यूथ शुड हैव अ राइट टू अ मीनिंगफुल, डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल लाइवलीहुड। तो वो ध्यान में रखते हुए ये सेंटर काम करता है। फिर सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ वर्क एंड एडवोकेटिंग फॉर यूथ राइट्स। ये सेंटर इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी जब हमने देखा कि यूथ वर्क एज अ प्रोफेशन और एज ए एजुकेशन कोर्स उसको एक रिकग्निशन नहीं है यूथ वर्क को लेके, और यूथ राइट्स एज अ सेपरेट सेट ऑफ राइट्स फॉर यंग पीपल, इस चीज़ का कोई रिकग्निशन नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करते हैं कि यूथ वर्क और हमारे यूथ वर्क मॉडल्स पे और अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं, जो और ऑर्गेनाइजेशन आज संस्थाएं से अलग अलग तरीके हैं सबके यूथ वर्क को लेकर, उस पे कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं। शायद आपकी अप्रोच हमारे लिए हमें नहीं पता, आपको हमारी अप्रोच के बारे में नहीं पता, तो क्या हम मिलकर ऐसे कुछ एक मॉडल ला सके जो दोनों के लिए काम करे शायद। और तो उसके तहत हमारे यूथ वर्क कोर्सेज होते हैं, अभी हिंदी और कन्नड़ा में होते हैं वो कोर्सेज, जिसमें यंग लोगों को ट्रेन करा जाता है हाउ दे कैन वर्क विद यंग पीपल इन देयर कॉन्टेक्स्ट इन अ वेरी वेरी ग्राउंडेड कंटेक्चुअल वे। तो वो है। और यूथ राइट्स के लिए हम एडवोकेसी करते हैं, जिसमें हम फैसिलिटेट, बिल्ड, प्रमोट एंड पार्टिसिपेट इन नेटवर्क्स दैट एडवोकेट फॉर यूथ राइट्स। तो कैसे हम लॉबिंग कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उतना बैठना हो सकता है, कैसे मेमोरेंडम्स हम सबमिट कर सकते हैं। NYP एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि कैसे हम अपने इनपुट दे सकते हैं एज अ CSO, तो ये काम रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट वीक कल्चर रिसर्च सेल है जो उन मुद्दों पर रिसर्च अंडरटेक करते हैं, पार्टिसिपेटरी वेरी एक्शन बेस्ड रिसर्च, जिन पे ज़्यादा बात नहीं की जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं चैलेंजेस एंड कंसर्न्स ऑफ वुमेन इन द कनाडा मूवी इंडस्ट्री, ये आप पढ़ सकते हैं। एक इसमें प्रोजेक्ट था जो हमारे सेंटर के साथ किया गया, चल रहा है जर्नी, वो है लैंडस्केप, मैपिंग द लैंडस्केप ऑफ यूथ वर्क इन इंडिया, कि कैसे यूथ वर्क ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में जो है उनके क्या क्या अप्रोचेज है, क्या क्या किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किन किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो एक रिसर्च हम अंडरटेक करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं हम, फाइनल स्टेज में है, ये देखने के लिए कि कैसे कैसे लोग अप्रोच कर रहे हैं यूथ वर्क को इंडिया में। तो हम बात कर रहे हैं कि यूथ राइट्स जो है वो फ्रेमवर्क को सारे हमारे काम को अंडरपिन करता है। तो बट हम जब यूथ राइट्स बोलते हैं तो हम उनसे क्या समझ रहे हैं और क्यों ज़रूरी है ये। तो हमारा मानना ये है कि जब आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आप ट्रांजिशन करते हैं, तो वो एक पीरियड है जहाँ बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, डिलेमास होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए युवा के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं, ना वो बच्चे भी नहीं है बट वो बड़े भी नहीं है पूरी तरीके से। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो युवा जिनके साथ हम काम करते हैं बहुत अलग अलग सोशल लोकेशन से आते हैं, होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो अलग अलग सोशल लोकेशन से आ रहे हैं। तो डिसएडवांटेज और ऑप्रेशन के साइड्स बहुत अलग अलग हैं। तो कैसे हम अलग अलग युवा के, हर एक युवा के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख सकते हैं। और तीसरा, यूथ को लेके जनरली बहुत नेगेटिव एटीट्यूड्स रहते हैं कि उनको काम करना पसंद नहीं है, गुलछरे उड़ा रहे हैं, गेड़ी मार रहे हैं, पार्टी करना पसंद है, या बच्चे हैं ये देश के लिए कुछ करेंगे, अभी आज प्रेजेंट पता नहीं क्या चल रहा है उनका, बट फ्यूचर यही बदलेंगे। तो ये सब जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी इस कैटेगरी को फेस करनी पड़ती है। अरे तो क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी बन गई है, जैसे हम औरतों के अधिकार की बात करते हैं, बच्चों के अधिकार की बात करते हैं, हम इमिग्रेंट राइट्स की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हमें युवा अधिकार की भी बात करना चाहिए, एक सेपरेट चार्टर होना चाहिए, एंड वी रिकॉग्नाइज यूथ एज राइट बियरिंग सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो क्या है ये यूथ राइट्स? सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स व्हिच आर कंटेक्चुअलाइज्ड फॉर यंग पीपल, रिकॉग्नाइजिंग यूथहुड एज अ यूनिक स्टेज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो काफ़ी ब्रॉड और एब्स्ट्रैक्ट है,
उनको हम कैसे कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं यंग लोगों के एक्सपीरियंस के लिए। तो जैसे राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करते हैं, बट हम यूथ के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, टू चूज एन आइडियोलॉजी, टू चूज अ जेंडर आइडेंटिटी, टू चूज अ सेक्सुअलिटी, टू चूज who to love and who to marry, when to marry। तो हम उन राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में है हमने उनको यूथ के लिए यूथ के लेवल पे लाकर उनको कंटेक्चुअलाइज करा है। ऐसी राइट टू इक्वालिटी, हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि एक अनइक्वल सोसाइटी में राइट टू इक्वालिटी का क्या, राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है। सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपके सोशल स्ट्रक्चर से बाहर निकलने के लिए, सोशल मोबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए। तो जैसे हमारा एक चार्टर है, यूथ राइट्स चार्टर, उस पे उसका काफ़ी हम उसको मानते हैं कि हाँ हमारा होली ग्रेल ये है, होली बाइबल ये है, हम उसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। तो ये एक आइडिया है संवादा यूथ राइट्स को कैसे दिखता है, जो हमारे सारे यूथ वर्क इंटरवेंशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। To make the government to take up something which recognize the rights and also create some systems for the realization of the rights. And in the beginning, there was campaign about building democracy in the campus, and campaign for setting up of sexual harassment related committees in the colleges. They were able to make colleges to really set up. And about career guidance, it was what next campaign, the right to career guidance, because you are talking, Martin also discussing that they are not doing that. This, why can't government give them career information, career guidance, and career counseling before they pass 10? Nobody knows. Teacher says something, you do this, okay, done this. Then question of failing, passing. Don't know whether this career is suitable to me, my background. Why not? If the even Dalit students, of course, they have to enter into bureaucracy. But as we discussed in March, but one has to cross-check whether really I can do that or not. So all this even starts from changing the career aspiration and broadening it, which otherwise very limited to teacher or this that. So we are trying that in our livelihood planning, and then also try to demand the state. See, but what happens? One has to start this. In our state, what happened? As I said in the morning, Youth Empowerment and Sports Department is working with the imams for their youth mental health program. And recently they asked us to plan a next phase for the youth mental health program, incorporating livelihood and basically livelihood and formation of youth federations at Panchayat level. So we had series of consultations and prepared a complete report. And in this report, we recommended forming youth federations at Panchayat level and also making them participate in the Gram Sabha, not only Gram Sabha, Yojana Gram Sabha. We were able to make the state government to conduct Yojana Gram Sabha, special Gram Sabha for youth, particularly after COVID, because they have to bring in their issues, whatever they can resolve at village level, they should. For that, not necessarily spending much, even Panchayat money itself is enough to really address the issues of the youth in the villages. So then anyway, also we suggested to set up youth empowerment centers in all the blocks, 237 blocks, taluks in Karnataka. And this was approved by the government. But the thing is, government is not ready to spend money. In the beginning itself, while making presentation to additional chief secretary, in the beginning only she said, okay, whatever you propose, we will not spend money. Then how will happen? Through volunteers, through NSS. NSS. Right. Yeah, NIG. Yeah, we said, no, it's not possible. Okay, if you are not ready, at least someone can try to raise funds and all. Then you approve, but not started the program. Anyway, but now they are spending 450 crores for youth self-help group at village level, but not spending. We asked only for the 31 crores per year to run all these centers. So those centers, one career guide, one counselor, and one youth worker will be there. They will be working in colleges and panchayats in the morning and afternoon in the center. Anyway, what I am saying is, this is the responsibility of the society to give proper career guidance. That is their basic right. They also campaigned for this in 2017. And one year we campaigned for a youth commission. Kerala government has set up youth commission. If there is any problem, particularly not related to development, but other
harassments and other problems, including honor killing or marriages and relationships or even education related problems. Recently, one boy in our place, my place, Bengaluru, committed suicide because he asked the warden to give his phone only, kept in warden's drawer there, and asked to wish his mother during her birthday. Now denied. Sometimes we feel that whether these are hostels and colleges or jails. That's one minimum respect about each individual. You are seeing as some commodity you are preparing for tomorrow. In policy also, we are part of the Karnataka state youth policy training. There was a line in the 2012 policy, engaging with youth for better tomorrow. I asked, what about today? You were studying in college and completing and finding your job, it will take 15 years. Don't you think that during that time also, students, you should be happy? Remove that word. Today and tomorrow. Today also, even learning also, they should enjoy that process. Anyway, Youth Commission, the government of Karnataka agreed, okay, give us the detail when we went to Kerala and studied how Youth Commission is set up. And we submitted a report. By that time, government changed. The Shasakam ko karid liya, some other chief minister came to power. Anyway, and we have also created our youth rights charter. Even Pravam also has youth rights and duties declaration and has to really work on conceptualize what are the rights and we campaigned for that also. Youth Empowerment Corporation, which was proposed in 2012 Karnataka state policy, which was not implemented. They proposed something, but not implemented. Hope at least in 1.5 years we'll be able to make the government set up. Anyway, for us to really to conceptualize youth rights and also work with policy, of course, Maharashtra is some years back. Maharashtra civil society organizations, including Matthew was also part of that committee. They prepared a draft youth policy with the totally focus on youth rights. There is a separate chapter on youth rights there, and we read that after few years, just 2, 3, 4 years back. Anyway, some efforts done here. Next. Anyway, globally, when we talk about youth rights, there are some efforts going on. We had last year this also. As part of our youth rights course, I had panel discussion with the Indian High Commissioner for Human Rights. They have a separate department for conceptualizing and working for a youth rights instrument. But we look for such things. For a child rights declaration to come, Atlanta India worked for 30 years. Going country by country and advocating for it. Finally, in 89, we were able to do that. And in Ibero-American countries, they have youth rights charter there. And in Africa Youth Charter, it's called as Youth Charter, but it actually talks about rights only. And in Europe also they are trying. Europe, they are actually even employment guarantee. Also they are doing it. It's called as Youth Guarantee, but basically it talks about employment guarantee. Particularly in this era, we talked about this, but we have not discussed about the much future of the employment scenario. Particularly now this artificial intelligence area is growing and very risky. Leave that one stage of reduced employment, but next level is coming, very risky and has to prepare for that. So who will take care of that? Of course, state is responsible. How it will change its economy and make sure that everyone gets employment. Anyway, but in South Asia or in India, there is no such much efforts. I think we should work at least SARC level, so that within India it's quite difficult keeping the changing political cultural scenario here quite difficult, because traditionally India has no concept of rights at all. Conventional, we are not a country. Only duties. Only duties. There is no concept of idea, right? Even in policy also you will not get a word. In this policy, you get where in social justice chapter there is one word. Right. It's not youth right, but social justice is right. But you will not find a word right.
So society has to say that these people also have right or not. Yeah, next. Yeah, we see this as opportunity. There is possibility of really making society, parents, teachers, general public, CSOs, and state also responsible to create a atmosphere, environment where youth empower themselves and groom. And we will not blame on them. We create a space where they build their life. Through that, automatically they build the country also in that process. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for this youth-centric presentation. Of course, others also youth-centric, but we get a very comprehensive youth-centric with advocacy, with various other initiatives. Which is like that tomorrow when we talk about youth charter or youth right charter, we should see some of these elements are part of it there, especially. And I was also thinking, even if the women budget cut can get money, why can't youth clubs or youth groups come together and ask for, starting employment opportunities and all those? Something we need to really focus on that, and going beyond that, look at youth rights and give adequate budgeting for the youth rights. And also, though it is in the paper and many places, I think that there is youth commission, but the youth commission is not very active like children commission or a women's commission or something. So somewhere we need to really become a little more vibrant on those areas. Okay, any questions to Samvada or Janardhana and Soumya? Questions? Yeah, Pramodini. सर आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन किया. आपने वाईआरसी के बारे में बोला, तो हम भी एज CYDA करके हम भी यूथ रिसोर्स सेंटर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं. अगर हम एडवोकेसी और कैंपेनिंग की बात करें तो किस तरीके से यूथ को मोबिलाइज करना है और उनको मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा एडवोकेसी और कैंपेनिंग? आपने तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पे रखे हैं. उसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेक होल्डर को इसमें अगर लेना है और उनका सपोर्ट मिलना है, जो चीज़ें हमें चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो किस तरीके से कैंपेनिंग और एडवोकेसी एक माध्यम हो सकता है यूथ को लेकर? And with that special focus on mobilizing youth, is it easy for it to, because we are finding it difficult to mobilize people beyond 21? गायब हो गया. पुराने जमाने में ग्रेजुएशन स्टूडेंट को मोबिलाइज करना आसान था, अभी नहीं. So how do you mobilize and how do you advocate? Yeah, our scale wise, our campaigns are in size. It's not much big. That's why it's not able successfully in making the government to do that. But usually what happens is she showed the flow chart. We reach about 20,000, 25,000, 30,000 every year through YRCs. The Padukku, whole Karnataka is catchment for that. Through our YRCs, because they go to colleges now. Ultimately, about 10% of them drop in into our centers. Then even after dialogues, and finally about yearly like 200-300 people become part of the in-depth sensitization, very intensive sensitization. Those workshops, structural analysis, pluralism, all 3 days workshops. We have a very good curriculum, but in the beginning it's so flexible, and then they have to go through these. But our mentors individually focus on them. They participate in these all workshops, but our model is youth mentoring model. Keeping the person in target. It's not actually learning, not only happens in the workshop. I have to suggest the person to read something and analyze the person's background. All these mentoring process, very, very focused. And one mentor will do mentoring about maximum 20, more than their 30. Actually, those 20, 30, in all the centers, 5 centers, about 100, 150 students. They only enter into the advocacy action now. Now 90 constitutional values advocates, young advocates, they'll work about 1 year, in fact finding 3 months and then campaign and all. And 30 enter into youth rights advocacy now. But again, youth rights advocacy, they work together because again, these are also constitutional values only. Now it's more structured and it has very good curriculum.
But the programs are very diverse and very creative. They're from sports to other activities. We are very good in cultural activities. Yeah, but that is actually how mobilizing, and we are not much able to mobilize the others. But these 100, 200, 300, they are the core. Solid. Yeah. Now, see, my question is that if you really want to work with the youth, a project-based approach will not do. The moment we implement a project, we are looking at them as beneficiary, which they said it. Youth are not beneficiary. Youth are stakeholders. They say we are part of you, we will do implement, you guide us and you facilitate us. The moment we say, okay, we have to report 300 youth gone through this training, that, we look at that. So we need a different way to look at youth work, not a beneficiary approach. But that doesn't mean we need money. But I would say that we should keep project outside, and whatever we get, we report to the project. Do the program differently, which is lacking youth, bringing youth, organizing various activities, how you can. See, I would suggest is that youth are stakeholders, they say, they can do, because the youth workers are also youth. If youth workers can do the work, youth also can do the work. So make them do work, rather than we look at them as a beneficiary. I think that is important, the best way to mobilize, engage youth. Rather than, look, sit youth, you are there, I am going to teach you. I think that approach will not work if you really want to work with. Yeah, now our youth advocates are supposed to bring three new youth with them. So 3 advocates for 1 group, 3 into 3, 9 will become. So those 6 new, they entered the sensitization process. So like happening. So now we directly engage them in this year we got about 102 students like that one. Yeah. After 6 months, that's become leaders. That's the best way to mobilize. Each one, I would say that in our experience, if you have one student coming from Ferguson, she or he brings another 10 to the program. So that's the way. Maybe one youth coming from a community, they bring around 20. So that's the way how we need to mobilize it. Thank you very much. Yeah, and one thing about mobilization, see, earlier we used to send to a lot of struggles and all. Exposure and also whatever in Bengaluru, whatever struggle happens, we used to send. But now it's quite challenge, very risky. Even we are not supposed to send to social movements. And also we should not try to that gone to send because they need that kind of experience. Also pending. Yes, pending. Serious struggle. Not struggle.